Hello everyone. Today we are going to discuss the remaining questions of paper 4 mechanics, May-June 2022 paper, and it's maths code 9709. ओके लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने ये सारी वर्किंग थी जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी हमने ये सारी वर्किंग थी। अगर आपने ये लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बल्कि अगर आपने कोई भी लेसन मिस किया है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं। Okay, now question number 5. A block of mass 12 kg is placed on a plane which is inclined at an angle of 24 degrees. So the angle is 24 degrees or mass is 12 kg. Diagram given है to the horizontal line. A light string making an angle of 36 degrees above a line of greatest slope. Okay. Is attached to the block. The tension in the string is 65 newtons. Tension in the string is 65 newtons. The coefficient of friction. अब coefficient of friction means कि ये केस जो है ये आपका लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का केस है। जब भी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का केस होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ मेंशन होगा, और यहाँ भी खैर ये मेंशन है कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का केस है ये। एंड इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप the plane. Find the coefficient of friction. Mu means coefficient of friction हमने find करना है। Okay, now let's see. सबसे पहले तो अब अपने components को resolve करते हैं। इसमें सबसे पहले तो अगर आप 65 न्यूटन की फोर्स को components में resolve करें, so जो vertical component होगा इसका that will be 65 sin of 36, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट विल बी 65 cos of 36. ओके, नाउ अगेन जो इसका वेट है वेट विल एक्ट डाउनवर्ड। तो इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है और इसका जो परपेंडिकुलर को ये एंगल विल बी 24। सो जो पैरेलल कंपोनेंट है दैट विल बी W sin of 24, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट विल बी W cos of 24. सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, सो इसका मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सो FR विल बी इक्वल्स टू म्यू R। एक और जब भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा तो एक आपके पास R भी होगा दैट विल बी रिएक्टिव फोर्स, जो कि दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द फ्रिक्शनल फोर्स। ये सबसे पहला स्टेप हमेशा इसमें ये होगा कि आप अपनी डायग्राम को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, एंड देन उसके बाद हम अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले तो as we can see it is the case of limiting equilibrium. So limiting equilibrium means that summation of fx will be equals to 0. now अब जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो राइट साइड पे 65 cos of 36, uh, 65 cos of 36 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, और जो ये जो वेट वाली फोर्स है इसके में माइनस W साइन ऑफ 24 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि 65 cos of 36 माइनस म्यू R माइनस, अब W क्या है आपके पास? वेट आपके पास क्या होता है? mg. So W is equals to mg, which means for this case W will be equals to
12 mass है और 10 आपका ये, so W will be equals to 120. So we can say that 120 sine of 24 is equals to 0. So we can further simplify it as mu r, mu is equals to mu r is equals to, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 65 cos of 36 minus 120 sine of 24. हम बेसिकली म्यू आर को दूसरी साइड पे लेके गए हैं. So from here we can say that mu will be equals to 65 cos of 36 minus 120 sine of 24 whole is divided by r. Similarly, we can say that this will be equation 1. Now summation of fy will be equals to 0. So now what does it mean? It means that जो हम vertical components में देखते हैं, so ये भी r will be upward. So r is equals to 65 sin theta sin 36. So r plus 65 sin 36, because दोनों forces upward side पे जा रही थी. And then vertical component में देखें तो ये weight वाला component भी है, that will be w cos of 20, w cos of 24 minus w cos of 24 is equals to 0. Now if we rearrange it, this will be r is equals to w cos of 24 minus 65 sine of 36. So w की वैल्यू हमें पता है 120 है, 120 cos of 24 minus 65 sine of 36. So इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं r की वैल्यू. So r is 120 cos of 24 minus 65 sine of 36. Now this will be equals to 71.42. Let's suppose 71.42. So r will be equals to 71.42. This will be, let's suppose, equation 2. Now put equation 2 in 1. Put equation 2 in 1. So mu will be equals to 65 cos of 36 minus 120 sine of 24 whole is divided by 71.42. So which will be, mu will be equals to, अभी हम देख लेते हैं. So bracket 65 cos of 36 minus 120 sine of 24 divided by the answer, the previous answer था आपका. So this will be equals to 0.529. So 0.529. This will be the final answer. This will be the final answer. I hope that the concept is clear. तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने अपने कंपोनेंट्स को इसको रिजॉल्व करना है, एंड देन वी कैन फाइंड द अननोन वेरिएबल. हियर द अननोन वेरिएबल इज म्यू. आर की वैल्यू आपने फाइंड ऑलरेडी कर ली थी, उसको हमने पुट किया साइमल्टेनियसली सॉल्व करके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A car of mass 900 kg is 900 kg mass is 900 kg is moving up a hill inclined at sine inverse of 0.12 to the horizontal. The initial speed of the car is 11 meters per second. After 12 seconds, the car has traveled 150 meters up the hill. After 12 seconds, the car has traveled 150 meters up the hill and has the speed of 16 meters per second. The engine of the car is working at a constant rate of 24 kilowatts.
ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमें हमेशा ये होगा कि हम अपनी एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। सो फॉर दिस केस ये दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इंक्लाइन प्लेन है। द एंगल इज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 0.2 और अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आपके पास विच इज गोइंग अपवर्ड, सेकेंड आपके पास आफ्टर 12 seconds. So a car of mass 900 kg. So the car का जो mass है that is 900 kg, okay, and it is going upward with the velocity, with the initial speed of 11 meters per second, and it is going upward. The car has traveled 150 meters up. इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस ये कवर कर रही है कार दैट इज 150 मीटर्स एंड इट हैज़ स्पीड 16 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड है दैट इज 16 मीटर्स पर सेकेंड। द इंजन ऑफ द कार इज वर्किंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 24 किलो वाट्स। सो जो आपके पास पावर है, जो आपके पास पावर इज इक्वल्स टू 24 kilowatts, which means 24,000 watts. Now find the work done against the resistive force during the 12 seconds. Okay, now first 12 seconds के अंदर उन्होंने कहा है कि अपनी find करें। Now what we can do, we will use the very basic concept that is कि आपके पास हमेशा work done by the applied force या work done by the driving force will always be equals to change in potential energy plus change in kinetic energy plus वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको हमेशा वर्क, पावर और एनर्जी के क्वेश्चंस में हमेशा हेल्प आउट करेगा। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व इट वन बाय वन। सो वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दिस इज द रेट ऑफ वर्क डन। द इंजन ऑफ द कार वर्किंग एट अ कांस्टेंट रेट of this, so power हमें given है, so we can say that as we know that P is equals to W by T, so for this case W is equals to P into T. Now work done by the driving force will be equals to, power is 24, let me do it again, power is 24,000 into time is 12 seconds, which is given here, that after 12 during the first 12 seconds is equals to, now GPE, GPE is change in moment, potential energy is mgh plus 1 by 2 mass is 900 into change in the velocity, that will be 16 square और initial velocity आपके पास 11 square थी, plus work done by the resistive force. So work done by the resistive force will be WR. Okay, now before finding out this one, let's find out the height first. Change in height. So height will be, as we can see that this is a right angle triangle. Okay, and it means that sine theta will be equals to perpendicular by hypotenuse. So for this case hypotenuse is so for this case the hypotenuse is 150. So on height, so hypotenuse will be 140. So height will be equals to 150
into sine theta here. Now sine theta will be equals to sine inverse of theta, or we can say that sine theta will be equals to 0.2. What was the angle? 0.12. It should be 0.12. So 150 into 0.12, so this will be equals to 150 into 0.12, it will be 18. So height will be 18. So we can say that this height will be equals to 18. अच्छा, इसमें एक चीज़ जो कंफ्यूज आप सबको शायद कर रही हो, दैट इज़ कि थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.12. सो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 0.12. तो हमने रीअरेंज करके डायरेक्टली हमने साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी. नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट 24,000 multiplied by 12, this will be equals to 288,000. So 288,000 minus mgh. Mgh is mass is 900, g is 10, and height is 18, minus 1 by 2, 900 into 16 square minus 11 square is equals to WR. So from here we can say that work done by the resistive force will be equals to, अब हम डायरेक्टली फाइंड कर रहे हैं, this minus 900 into 10 into 18 minus, now we can use 0.5, this is 1 by 2, 0.5 into 900 into, we can use the brackets here, 16 square minus 11 square, bracket close. So this will be equal to 65250 joules. 6525. So this will be the final answer. That's what we have to find out, that work done by the resistive force, work done against the resistive force during the 12 seconds. I hope that the concept is clear. Now let's move on to the second part, the next part. Okay, here we can see that the car then travels along a straight horizontal road. There is a resistance to the motion of the car. Of this. So ये resistance आपको given है 1520 plus 4 newtons when the speed of the car is v meters per second. So this is the speed of the car. The car travels at a constant speed. Now what does this statement means? Constant speed. Constant speed means that the acceleration is 0 with the engine working at a constant rate of 32 kilowatts. Now find this speed. अब हमने स्पीड फाइंड करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज दैट. अच्छा, कांस्टेंट स्पीड में हमने एक और चीज़ भी डिस्कस की थी. वेन एवर वी हैव द कांस्टेंट स्पीड, सो वहाँ पे फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू द बैकवर्ड फोर्स. ये हमने मैथमेटिकली इसको प्रूव भी किया था, और वैसे हम दोबारा भी देख लेते हैं कि as we can see that F is equals to ma, and F is the forward force minus backward force is equals to m. आपके पास कार का जो मास था 900 into acceleration. Now here we can see that acceleration is 0, so this will be equals to, we can write it as forward force is equals to
the backward force. Forward force is equals to the backward force. That's what we have proved previously. Whenever we have constant speed or acceleration is 0, in that case forward force will be equals to the backward force, और mathematically भी हमने prove कर लिया. Now here we can see that the forward force is the driving force and the backward force is the resistive force. So what we can say from here, that driving force is equals to P by V. As we know that P is equals to Fv, so we can say that F is equals to P by V is equals to the resistive force. Now here we can see that the resistive force is given, that is 1520 plus 4V is the resistive force. Now from here we can see that power is 32 kilowatts. So it means 32,000 is equals to V into 1520 plus 4V. Now this will be equals to 1520 V plus 4V square minus 32,000 is equals to 0. So 4V square plus V minus is equals to 0. So now we have to we can divide it by 4. So V square plus, अगर हम 1520 को divide करें, 1520 divided by 4, this will be 380 V minus 32,000 divided by 4, 8,000, minus 8,000 is equals to 0. Now this will be equals to, we can simplify it as V square, अब हम factorize करें इसको, so this will be plus 400V minus 20V minus 8,000 is equals to 0. So V को अगर हम कॉमन लें, so V plus 400 minus 20 को अगर हम कॉमन लें तो V plus 400 is equals to 0. So from here we can say that V plus 400 is equals to 0 or V minus 20 is equals to 0, which means that V is equals to negative 400 and V is equals to positive 20. So this cannot be the answer because negative में आ रही velocity. So the speed will be equals to 20 meters per second. Now this will be the final answer. I hope कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. इजी सा क्वेश्चन था ये, सिंपल सा. सिर्फ इसमें आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि F इज इक्वल्स टू ma को किस तरह अप्लाई करना है और कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है. कांस्टेंट स्पीड मींस जब आपकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, या इन अदर वर्ड जब कांस्टेंट स्पीड हो तो अप्लाइड फोर्स will be equals to the resistive force. Now let's move on to the question number 7. In question number 7, a particle P moves in a straight line. The velocity v meters per second at time t second is given by this. So differential show that there is an instantaneous change in the acceleration of the particle at time is equals to 10. Now as we can see, we have to show the instantaneous change in the acceleration. So velocity की equations given है और हमने acceleration की equations, we need the acceleration equation. तो वहाँ से अगर हम find करें first interval के लिए हमें पता है कि इसको हमने differentiate करना है.
So acceleration for the first interval into now this one is 0.5 t. इसको अब differentiate अगर करें, so this will be equals to a1, इसको मैं 1 से शो कर रहा हूँ, this will be equals to 0.5 t power 1 minus 1. So this will be acceleration for the first interval will be equals to 0.5 meters per second square. So this will be the final answer over there. Now for the second one, acceleration will be equals to d by dt. This will be 0.25 t square minus 8t plus 60. Now for the second interval we can see that a2 will be equals to, now इसको अगर differentiate करें, so this will be 0.25 into 2 minus 1 minus 8 into t power 1 minus 1 plus 60. So ये constant है, so constant का derivative तो with respect to time is 0. So a2 will be equals to 0.25 into 2. What will be the answer? 0.25 into 2 will be equals to 1 by 2 or 0.5. So 0.5 t minus 8 और आगे 0 है. So this will be the acceleration. This will be the acceleration for the second interval. Now the question was that show that there is an instantaneous change in the acceleration of the particle at time 10. So time 10 पे a1 को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो at t is equals to 10 पे भी वो वही रहेगी. Second पे अगर आप देखें, so when time is 10, now we can see when t is equals to 10, so a2 will be equals to 0.5 into 10 minus 8. So a2 will be equals to this will be 5 minus 8. So a2 will be equals to 3, negative 3. So this will be the final answer. Let's move on to the second part. Find the total distance covered by P. Find the total distance covered by P in the interval this. Now अब हमें ये पता है कि थोड़ा सा एक रफ सा स्केच बना लें. तो फर्स्ट तो आपके पास सिंपल सी बात थी, कॉन्स्टेंट्स थे. सो अगर हम देखें तो 0 to 10 फर्स्ट इंटरवल के लिए देखें, सो 0 to 10 हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी. सो दिस विल बी, और अगर हम इसकी वेलोसिटी देखें 0 से 10 की हमारे पास वेलोसिटी क्या थी, 0 से 10 की. अब 10 पे अगर हम वेलोसिटी देखना चाहते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5. सो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 0 से 10 के लिए दिस पॉइंट विल बी, this will be equals to 5. Now we can easily find out the area under the graph will gives us the distance covered during the first 10 seconds. So this will be 1 by 2, base is 10 and height is 5. So distance for the first interval will be equals to 25 meters. Now for the second one. Now this was for the first interval. Now for 10 to 20 seconds, let's do this one. Now हमें ये पता है कि v2 हमें given है. Now for v2 is given to us. So before integrating, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने इसको इंटीग्रेट करना है.
to find out the distance. Velocity v2 given है आपको, और and we need the distance. So distance means we have to integrate. So integrate करेंगे इसको, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट कर लें आप, कि जब भी आपके पास कर्व 0 पॉइंट से चेंज हो, लाइक इस पॉइंट से पास करे या डाउनवर्ड से अपवर्ड साइड पे जाए, सो उस केस में आपने एरिया अंडर द कर्व, या जब भी आपके पास हॉरिजेंटल लाइन से आपका कर्व पास करे, तो या डाउनवर्ड से अपवर्ड या अपवर्ड से डाउनवर्ड शिफ्ट हो, तो आपने डिफरेंट इंटरवल यूज करने। मतलब ये है कि एरिया अंडर द कर्व ये अलग फाइंड करना है, और इसके लिए आपने डिफरेंट लिमिट्स को यूज करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले तो अपने इसको चेक करेंगे कि अब आपको पता है कि v2 फॉर v2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा पहले कि अब v2 की इक्वेशन क्या थी आपके पास। इक्वेशन आपके पास थी 0.25 t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 60। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.25 t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो 0.25 से अगर हम डिवाइड करते जाएं तो दिस विल बी t स्क्वायर माइनस, नाउ 8 डिवाइडेड बाय 0.25, दिस विल बी इक्वल टू 32। तो 32t माइनस, नाउ अगेन 60 divided by 0.25, so this will be equals to 240 is equals to 0। now अब हम इसको ज़रा फाइंड करें, so this will be equals to t square minus 20t minus 12t minus 240 is equals to 0। this should be plus 40। ओके, अब चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव तो ये बनता है, बट 20 मल्टीप्लाई बाय 12 विल गिव अस 240। फाइन, नाउ इट मीन्स दैट t, इसके जो फैक्टर्स होंगे t माइनस 12 और t माइनस 20 इसके फैक्टर्स होंगे, विच मीन्स t will be equals to 12 and t will be equals to 20। so इसका मतलब ये है कि 10 to 20 तक हमारे, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक 10 से 12 तक एंड देन 12 से 20 तक। हम दो डिफरेंट तरीके से इसको इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज ये इंटरवल्स चेंज हो रहे हैं। और थोड़ा सा इसके आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। मॉड 5 3, नाउ ए क्या है आपके पास, जो एक्स का कोफिशिएंट था दैट इज 1। बी क्या है आपके पास -32, और सी आपके पास क्या है 240। सो एक आपके पास 20 फैक्टर है, दूसरा 12। यस, ठीक है। नाउ अब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 10 to 12। so integral of 10 to 12 v2 dt plus 12 to 20 v2 dt। now from here we can say that distance will be equals to 10 to 12। अब v2 की वैल्यू क्या थी 0.25 t स्क्वेयर माइनस 80 प्लस 60 ओके dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 12 to 20, this will be 0.25 t square minus 8t plus 60 dt। now from here we can directly integrate so हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। so distance
डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, फर्स्ट को इंटीग्रेट करें तो 0.25 टी क्यूब माइनस 8 टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी डिवाइड बाय, देन प्लस 60 टी। सो यहाँ पे आपने लिमिट्स पुट करनी है फ्रॉम 10 to 12, देन प्लस सेकेंड को भी अगर हम इंटीग्रेट करें सो दिस विल बी 0.25 टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8 टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 60 टी, और इधर यहाँ भी लिमिट्स अप्लाई करेंगे 12 to 20. Now distance will be equals to, so अब हम इसमें पुट करें अगर, सो ये आपके पास क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट पुट कर लेते हैं 0.25, अपर लिमिट इज 12, सो 12 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8 इंटू 12 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 60 into 12 bracket close minus again lower limit 0.25 into 10 cube divided by 3 minus 8 into 10 square divided by 2 plus 60 into 10 whole is bracket is close। और सेकंड में अगर हम देखें तो सेकंड आपके पास क्या है, 0.25 अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, 0.25 इंटू 20 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8 इंटू 20 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 60 इंटू 20 minus, now this will be minus 0.25 minus 8, minus 12 here, so 12 cube divided by 3 minus 8 into 12 square divided by 2 plus 60 into 12। ओके, तो ये वर्किंग आपको लग ज़्यादा रही है बट इतनी लेंथी है नहीं। हम वन बाय वन एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, you can integrate it and your final answer, you can directly integrate it and your final answer should be the distance will be equals to, now you can integrate it and you can just put the limits and you can use the calculator and simplify it. Your final answer should be distance should be equals to 51 meters. I hope that the concept is clear. So this is the whole idea about it, but in this part the most important thing is that you have to apply the limits. So your limits for this case will be from 10 to 12 and then 12 to 20. Okay, you can easily integrate and you can easily apply the limits over here. So that's it. I think that is it. Yes. So now we can say that now in this class we have discussed paper 4 May-June 2022 पेपर 4 वेरिएंट 2, और इसमें हमारा जो फोकस था वो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 तक था। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, बट फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो you can ask it in the comment section. Thank you.